Good evening and namaskar, everybody. I hope I'm audible. Yes? So great. Welcome, welcome. It's nice to see lovely faces and a fabulous set of panelists here. Good evening and welcome once again to season 2 of Small is Big online writing contest. I don't want to make any mistakes and miss out any milestones. So I would be reading out the panel of our judges. Yes. And prior to that, I extend a warm welcome to all our 12 finalists also. Those who have got butterflies in their stomach, please raise your hand. Yeah? Yay. Join the gang. Welcome to the club. Okay. So without much ado, I begin with the panel of judges. The panel of judges comprise of Vinita Nanda, the editor of the online news portal, The Daily Eye. Hello, Vinita. Anil Pandey, the writer of Madhur Bhandarkar films Dil To Bachcha Hai Ji and Indu Sarkar. Hello. Dr. Ankur Gupta, a published poet and the one with the Shairana Andaz, if I may say. Hello, Ankurji. And an award-winning scriptwriter and author, Gajra Kottay, author of Broken Melodies and Autumn Blossoms, and the writer of groundbreaking TV shows such as Astitva, Ek Prem Kahani, and Balika Vathu. Hello, Gajra. You're so pretty. Lovely to see you. And of course, our very own Dinesh Raheja, DR, a poet, film historian, and the man behind Rock with DR YouTube channel. Yes. So at any point of time, we'll have 4 judges marking them out of 10. So the total would be 40. Righto? So I would like to invite the first 2 finalists to join us. Rohit, may I have your attention too? First one, Devyani Rani from Dubai. Are you there, Devyani? Hello. Rohit, please unmute. Hi. Hello. Congratulations. Thank you so much. I also invite Poonam Kaval from Mumbai. Poonam, are you there? Hello. Congratulations. Hey, thank you. Thank you. Hello to everyone. A very good evening. Hi, Poonam. Hello. So beautiful. So I invite Devyani. You've got a lovely name. I invite Devyani to please present your piece. And I request all the judges to be all ears. And after a piece is done, I would request you to share your marks out of 10 each. Righto? Yes, over to you, Devyani. Thank you so much. It's an honor to be a part of this program. सभी दिग्गजों को सादर नमन. ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपनी कविता की ओर बढ़ती हूँ. मेरी कविता का शीर्षक है मायके के मायने और ससुराल का मान. दरवाजे जहां हमेशा खुले पर गम कभी अंदर ना आया. अपने पैरों पर जहां मुझे खड़ा होना सिखाया. पकड़कर उंगली जहां मुझे चलाया. पूरा बचपन जहां मैंने बिताया. राजकुमारी सी जहां पली और मैं अबोध सबको तंग करती. तो भला इस मायके को क्या मैं स्वर्ग ना कहती. अपनों को पराया कर पराये घर को अपना करती. सबसे अजीज एक लड़की अपने मायके को ही कहती. उन अमरूद के पेड़ों पर चढ़कर लड़खड़ाना. रसोई से पकवान की सुगंध, बर्तन और माँ की चूड़ियों का खनखनाना. अब भी वहां घंटों सहेलियों से फोन पर बतियाना. अब भी वहां वैसे ही मेरे कपड़े, संदूक, अलमारी, गहने और दराज में एक ऊटपटांग सा खजाना. वहां ना कोई तनाव और ना कोई परेशानी. छुपकर सबसे मासूम बन मैं करती छेड़खानी. खुलकर वहां मेरी अल्लड़ नादानियां. छज्जे पर से खुशी से देखती मैं वहां संकरी गलियां. वहां मेरे नखरे सिर्फ मेरे माँ बाप ही सहते. औपचारिकता तो बस बाहर वाले करते. राखी पर अपने भाई भाभी से वहां मिलना.
संस्कारों की ओढ़ और खुशियों का बिन मांगे मिलना, बेटी के सर पर यह मायके का आंचल, बस संजोई सारी अनमोल यादें, यही है मेरी निधि जो है अचल। Hello, Nandita. Welcome. Hi. How are you? Hi, Nandita. For Devyani. 7. 7. You would like to add anything? Say anything? See, it was beautiful. बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने किया. And जो Micah, Sasral, the emotions and everything were perfect. But still, because there are more contestants left, let's see how they all. So it's a good start. It's a good start. I quite enjoy it. Very. Thank you. Thank you. Vinita ji. Thank you so much, Anil ji. I can't see her. Rohit, has she joined? Vinita ma'am is not there. So I move on to Dr. Ankur Gupta, please. जी. दिव्यानी जी, मुझे आपकी सबसे बढ़िया पंक्तियां लगी. वहां माया है और वहां मान है. वहां पीहर मुझे भाता है और वहां मुझे कोई चाहता है. बहुत ही खूबसूरत. बहुत अच्छा किया आपने. मायके और ससुराल में टकराव पैदा नहीं किया, और जो आपने औरत का मान है वो दोनों जगह रखा. अदरवाइज ये है कि मैं खुश हूँ मायके में और वहां दुखी हूँ, वो पुराना हो चुका. तो ये मुझे सबसे बढ़िया आपका लगा कि औरत है, एक जगह हाँ रुक्मिणी हो सकती है, एक जगह राधा हो सकती है, लेकिन मान दोनों जगह. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं आपको 7.5 दूं. बढ़िया बढ़िया. बहुत विमता नहीं बढ़िया. आई है तो विमता नहीं आई है तो संगीता गजरा को कहे मार्क करने के लिए. जी, डन. जी. Yes, after you. Yes, dear. कौन पहले? आप. Should I? Gajra ji. Yeah, Yes. yeah. जी. I will give a score of 8. मुझे ओवरऑल, क्योंकि जब भी हम शायरी की बात करते हैं, मैं बिल्कुल पोएट्री में नहीं हूँ प्रोफेशनली, लेकिन मुझे थोड़ा सा हमेशा लगता है कि देयर इज अ स्ट्रीक ऑफ डिप्रेशन, देयर इज अ स्ट्रीक ऑफ सैडनेस. और इस कविता में मुझे लगा कि ऑप्टिमिज्म बहुत है, बहुत थोड़ा सा ज्यादा ही है एक्चुअली आइडियलिज्म. मगर एक ऐसी औरत जो एक्चुअली कोई कुछ कंप्लेन नहीं कर रही, जो दोनों ही अपने जो उसकी जिंदगी के दोनों एस्पेक्ट्स हैं, जो मोस्टली हमारे लिए जरूरी हैं, दोनों ही पहलू जो हैं वो लाइफ को ज्यादा रिच बनाते हैं. और यहाँ पे उनको देखने का नजरिया बहुत ही पॉजिटिव है. और आज के दौर में जितनी पॉजिटिविटी हम अपने जीवन में और अपने रिश्तों में ला सकें, वो कम ही पड़ती है, कभी ज्यादा नहीं होती. इसलिए आई वुड गिव हर अ स्कोर ऑफ 8. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. Thank you. Yes, dear. I would give a 6.5. क्योंकि जो भी उन्होंने दर्शाया, जो उन्होंने डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छी तरह से किया. लेकिन मुझे ऐसी कोई भी बात उसमें नहीं लगी, ख्याल है. So I would give a 6.5. Thank you so much for the feedback. Thank you. So, Devyani, your score is 29. Fingers crossed. Let's move on to Poonam Kamal. Yes, Poonam, are you there? Yeah. Yes, very much so. 1 minute. Yeah. So a very good evening to everyone. I'm very grateful that I'm a part of this and we're getting opportunities to express our art. So thank you so much. And I'll be reading a story on a travelogue experience which I had, which was actually serious, but I've tried to, get some fun out of it. So here it goes. It's titled as Our First. I cherish various art forms, including sketching, dancing, poetry, and singing. Indulgences in them bring me extreme joy. A welcome detour from the routines of calibrated, management-aligned corporate living. I am married to a diagonally diverse man who claims breaths of fresh air
from adventure sports. As parents, we introduced our kids to both these interests and left it to them to fill their respective bags of likes. I recall our trip to Kulu Manali. Our son was 9 and our daughter 6. We chose to go river rafting for the beginners. Our first, but an innumerate one for my son, for my husband. Favorable weather, all safety precautions in place, a very, very clear clench on the instructions, an all excited family, and 5 more, including the rafting instructor, climbed into the raft. Nothing, just nothing could have been more ideal. Row, cried our instructor, and we took off. Each time our oars cut through the chilling Bias waters in complete synchronicity, ho, came a collective shout, beating the noisy, rapid burbles. Just as I was beginning to feel all empowered and fearless, a mighty rapid scraped the edge of our raft and lifted us up against a protruding rock. Static. Our raft became the hypotenuse of a right-angled triangle with the rock and the river being the other 2 sides. Silence prevailed. The only words that we heard were the instructions of the guide to pull the raft down, which we finally did. All relieved, we started off again. The Bias seemed unruly, with generous ice meltings, making it very, very turbulent. A more massive rapid engulfed the entire length of the raft and flipped it upside down. Our raft capsized. We were underneath the raft in the chilling Bias waters. What should I do now? Haunted me. Where are my kids? Are they safe? All of that just didn't matter. Against cries of help from all, I grabbed the collar of a young co-rafter, probably half my size, and together we began a roller coaster ride, getting bounced like a basketball with the rapids beating us down and our floats fighting back with equal intensity by pushing us up again. This went on for a while, and maybe the young man felt stifled, while I kept swallowing water into my mouth, nose, ears, and, being a non-swimmer, I wasn't familiar with the breath control tactics. But that moment, my survival was my priority. This ordeal went on for a while, and we both settled to some regularity in the patterns of this bouncing in and bouncing out of the Bias. The young man finally gathered his breath and, in complete politeness, requested me, ma'am, please let go of me. Honey-layered words, but how brutal. They meant separation at this crucial life and death moment for me. I was honest, and I bluntly refused, saying, I don't want to go down alone. I would rather have company. You are the only one I can see, so stay. I must have been convincing for him to oblige, and he paid a price for being polite. We must have continued this for a couple of kilometers, and we were just getting used to it. Almost there, I heard a voice. It wasn't his.
It was husky and loud. Wow, we have company, I thought. I looked up to see a rescue boat heading towards us. Unbelievable, but most welcome. I saw my son, daughter, and husband waving at me. To have lived to survive nature's wrath and to see my world sailing towards me, gratitude ran down my entire drenched length. I got lifted and dual shivers gripped me. One of the grueling incident, and second of the chilling temperatures. A warm family hug and blankets handed over to us made up for it. This serene union got broken by my son suddenly screaming, "Ma, see your chappal. It's riding that rapid there." Our heads turned and we all watched my soul chappal getting consumed by Vyas. We missed that fate, thankfully. All the others were safe too. Our first, but the most unusual river rafting experience that will stay etched in our memories for life. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, Anil. So, very nice. आपका description मुझे बहुत अच्छा लगा. And you have a control over language also. Language भी आपकी अच्छी है, बढ़िया है. ये आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस है and आपने उसी तरीके से उसको you have explained it to us. Only thing that I was expecting out of it, एक तो our first, तो उसका जो yes, literally it was your first rafting experience, बट वो कहीं किसी चीज से जुड़ा नहीं, मतलब कि कोई एक लर्निंग, कोई एक एंड मतलब कि किस तरीके से उसका जो कंप्लीशन है वो एक किसी एक कंप्लीट वाला जो फीलिंग होता है ना कि यस आर फर्स्ट विद द एंड एंड व्हाटएवर द एक्सपीरियंस वाज, मुझे कहानी में एक स्टार्ट मिडिल और एंड होता है, उसमें जो कनेक्ट आ जाता है ना वो नहीं आता, तो उसमें वो वाला बस थोड़ा सा मजा रह गया. अदरवाइज बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, सब कुछ अच्छा था. बट वो हो जाता तो बहुत ही कमाल हो जाता कि इसमें एक लर्निंग भी आ जाती, इसमें एक कोई लाइफ का एक कनेक्ट मिल जाता, या कोई एक अलग तरीके का मैसेज मिल जाता, या बीच में हाइज एंड लोज में भी कुछ एक लाइफ के इंसिडेंट की कुछ एक लर्निंग से उसको जुड़ जाता, तो मतलब एक तरीके से उसमें कनेक्टिविटी आ जाती और वो बहुत ही रिच हो जाता. तो इसी वजह से आई एम जस्ट गिविंग यू 6, बट इट वाज वेरी गुड. Thank you. Thank you. Thank you. I move on to Ankur Gupta. Yes, please. Poonam ji, great effort. Your flowery language, theatrical diction, expression, voice modulation, full marks to that. I got reminded of Piyush Mishra ji from Tamasha movie. You know, this is how he narrated the first half in that. I agree with everything that Anil Pandey ji said. I think the story got lost little bit in the process and less in the profit of it. So I think maybe if it can be, क्योंकि आप कहानी में से ना एक गोशा ढूंढते हैं, what do I as a listener take out of that story? वो थोड़ा सा missing लगा. It went into the process of rafting too much. Okay. Okay. I'll give you also 6. Come again. 6. 6. Okay. Yes, DR. Is there a fourth Like judge? to say something? Yeah, of course I will now. Yeah. मुझे 2 बातें बहुत अच्छी लगी. एक तो यूजुअली लोग बताते हैं कि मेरी फैमिली डूब रही है, मेरा पूरी जान उसमें है, मेरा, आपने कहा कि मेरे लिए मेरा सर्वाइवल उस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट था. तो it sounds selfish, but it sounds maybe realistic also. You're right now at that time it is the survival, you know, it's your survival that matters to you. Right. And secondly, मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि you nab the collar and you are not willing to इसको भी डुबा के मैं डूबूंगी या मैं सर्वाइव करूंगी और ये भी सर्वाइव करेगा. तो वो 2 मुझे टचेस अच्छे लगे. लेकिन एंडिंग में ऐसे कुछ मुझे ड्रामा नहीं लगा, ऐसे थोड़ा फ्लैट हो गया. वो चप्पल वाला इंसिडेंट अच्छा था कि चप्पल चला गया, मैं नहीं गई साथ में,
That was good. It was a tremendous narration. It was a tremendous build-up also. But as the other judges have explained, the build-up did not reach a crescendo. I mean, I Okay. agree Okay. that the chappal floating was, it could have been a little more emotive, as in, oh my God, this could have happened to me. That I felt did not come across. The humor which you had built up was very nice, with especially the holding of the collar and all of that. But I kept wondering what really happened to your savior of sorts. So I felt a little cheated because I didn't get to Okay. know, so I felt that towards the end, it went, I think you just lost a little steam. The Okay. excitement and the build up which had happened towards that in the very last bit, you sort of lost steam. So 7 from me. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. So Poonam, fingers crossed, your score is 26. So all the very best. Thank you. Thank you. Okay, now can I go because I have to go Yes, somewhere? yes. Am I? Yes. Thank you so much and wish everyone all the best. And I'm sure Dinesh is going to text me, or the group will text me whatever happened. Thank you. All the best. Thank you All the so best. much. Bye-bye. Bye bye. Bye bye. So before I announce the third and fourth finalist, I think DR has a question for Anilji. Yes, DR, over to you. But the biggest hits now, Anil, are action films. Yes. उसमें कितनी writing की जरूरत है? See, अभी भी see writing can never go away. See, because अगर एक अच्छी writing लेंगे आप, भले उसमें एक 5 set pieces होंगे action के, जिसपे 80% devotion हुआ होगा budget का और time का in terms of shooting and budget and everything. 80% must have gone to shoot those 5 action pieces. But still, if you compare in today's time, there is a film called Jawan, and there is a film called Tiger 3. Irrespective of good, bad, ugly, we don't get into the merit of the films. But see, Jawan, irrespective of whatever, is doing such a high business in comparison to Tiger 3, because Jawan has more emotional tangents, angles, conflicts, and everything than Tiger 3. So the space of story, the space of conflicts, the space of drama is still there, even though yes, 80% time of will be spent in an action film for action. But yeah, it's foreign Hollywood ho, Bollywood ho, wherever, whichever movie industry, action film or whatever, the space of telling a story or conflict or anything is always there, irrespective of the genre. Thanks. Dinesh, हाँ. I'll also have to leave in about a bit, so I just wanted to. You are going to recite something, right? I thought I'll read a bit from my Yeah. book, Unlikely Please. Hero. I think yes, please go ahead. Please go ahead. Sangeeta? Yes. Hi. Hello. Hi. Hi. Hi, Fishy Hi. sir. How are you? Yeah, hello. Congratulations. I Hello. came in specifically for Dinesh, Sangeeta, and Nandita. It is almost 11:45 here, and I said no. I have to at least join in for Oh 5 my minutes. God. Where are If you? not, I am in Sydney, Australia. How? Down under. No, you better go to sleep. We'll wish you good night. Thank you. Yes, no, Dinesh. I just can I say a couple of words before I Yes, leave please. and just get out? Absolutely. Yeah. No, it's always a privilege to be where Dinesh is concerned. Thank you. He's more than a friend. It's not because he's so kind to me that I'm here, but yes, I feel like being here because he does something really worth my while, and it's always been worth my while whenever I've come online. So I just want to tell the participants that it's great fun when you always come together as a group, whether you lose or not, whether you win or not, it doesn't really matter, but just get together. Is the camaraderie that actually brings out the best in all of us. When we have a group, I've done a lot of television shows. We have a group. I've done a lot of contests. We have a group. Yes, sometimes you lose, sometimes you win. Does it really matter? What matters is the kind of friendship that you've created while you have been on a contest. And I think that is invaluable.
as far as I'm concerned. I mean, I've known Dinesh now for a couple of years, and it's always that. Why are we always together? Because I think he's a great friend, and you make friends only by being together. So please, guys, just be together, be as a cohesive unit, be on WhatsApp, take each other's numbers, criticize as much as you want, doesn't really matter. But at the end of the day, you are friends. So just be friends and leave it at that. I Don't completely squabble second what over. you have said, Shishir. It's lovely to see you here. And I Thank you. really want to thank Dinesh for even an initiative like this, because I know Yes. there Thank is you. nothing to be, inverted commas, gained. But we all Yes, know what we gain out of something like this. And it's absolutely. absolutely precious. Absolutely. Absolutely. It is very, Thank very you. precious. The friends that you make on these kind of platforms are friends forever. They come once in a lifetime, and you have to treasure that friendship to the maximum. So guys, just be there for each other, and I'm sure by the end of the contest, by the end of it all, when you reflect back tomorrow morning, you'll think that yes, I think it's necessary to have been together and been friends. So thank you so much, Dinesh, for always having Thank you for me. coming in And the middle of the night. Thank you so much. no, my pleasure, absolute pleasure. It's always a pleasure to be where you are and what the kind of Thank you. initiatives that you've been taking. So, yes, thank you so much. Good night, all of you. Have a Good night. fantastic Congratulations, ma'am. evening. Thank Nice. you. Take care. Thank you. For Take the care, one Nandita. Take care. milestone. Bye, Good night. Sangeeta. Take care. Bye, Take care. bye, Shishir, Bye, Sangeeta. Shishir. Bye. I'm going to sleep very well today. Have a Super. good I'm so Good glad. night. I hope you sleep every day like that. Love you. Thank Love you you. guys. Bye. Take care. Bye. bye. Thank you. Thank you for joining us. Sweet. So sweet. Pleasure. Absolute Yeah. pleasure. Thank you, Shishir. फिर मिलेंगे. Zarur milenge. जी, जी. Yes. So, Nandita, yes, over Yeah. to you. Yeah. So much film. It's called Jane Bhi Do Yaro. Right. So this is in Om's own words. Jane Bhi Do Yaro went on to become a cult film. Kundan Shah is a bit of a scatterbrain and looks a little lost on the sets. He exudes a kind of nervous energy, but the nice thing about him is that he trusts the actors and let them do and improvise. He does not go strictly by the rule books. The film was made on an extremely low budget, so low that the food came from Kundan's home, from Kundan's house. His wife cooked with the help of two bhais, and Om remembers there would be dudi curry and aloo sabzi almost every day. He rarely wanted to break for lunch, as time was money, and if he did, he would pick up his plate while the last shot was being taken, and after announcing action, he would start filling up his plate. By the time he said cut, he would start eating. While the shot was being canned, he would urge the others, hurry up, eat fast, as he had already eaten and was ready to shoot. Since they could not afford a hotel and the shoot was in Alibag, actors would take turns sleeping on the veranda of the shooting bungalow, literally on the floor. The crew members were not so lucky, as they had to shoot virtually without a break. One day, the director of photography, Vinod Pradhan, was found sleeping in an upright position with his eye on the camera. The unit realized it when no sound came from the camera after the director announced action. Roll camera. It was the poorest film unit Om worked with, but it was loads of fun. And that goes on to prove that simply having great sets and locations with a lot of glitter does not necessarily make an everlasting film. Lovely. Lovely. Lovely share. Lovely. In fact, the entire budget of Jane Bhi Do Yaro, which was 16 lakhs back in 1985-86, was actually the price of the Bisleri, the bottled water for City of Joy in 1993.
How I became a man the second time. At 20, life felt like an open road, full of vigor and possibilities. I was studying engineering, a path chosen with ambition and pride. My days were filled with the usual college experiences, but my evenings were reserved for something more thrilling: dates with Priya, my doctor's secretary, a year older and radiating a shy beauty. Our relationship blossomed, slowly nurtured by weekly dinners and drive to a secluded spot under, under a broken streetlight where we found privacy in the shadows. The excitement of these secret encounters was intoxicating. One fateful evening, as we lost ourselves in a tender embrace, my world turned upside down. Abruptly, my car door flew open, and a muscular policeman, towering at 6 feet, yanked me out. He spoke with a thunderous authority, accusing me of public indecency and threatening to haul us to the police station. Panic engulfed me. The thought of a police record was unbearable, a stain on my future and a disgrace to my family. In a desperate bid to escape this nightmare, I reverted to my innate skills in negotiation and bargaining, honed through a lifetime in a family of businessmen. As I stammered excuses and denials, trying to paint Priya just as a friend, the officer remained unmoved. In a final, frantic attempt to dissolve the situation, I offered my most precious possession, a brand new Swatch watch, a token of my parents' love from Switzerland. Amidst my pleading and crying, the officer refused to show any respite and crossed all levels of respect and decency when he asked me from where I had picked up the girl, indirectly implying Priya to be a woman of the night. Hearing this imputation, something extraordinary happened. Priya, usually so reserved and quiet, emerged from the passenger seat with a ferocity that I had never seen. She confronted the policeman with a lioness's courage, claiming our innocence and threatening legal retribution. Her bravery was a stark contrast to my own demeanor. While she stood tall, I crumbled, offering bribes and begging for mercy. But her assertiveness shifted the balance. The officer, visibly shaken by her defiance, reluctantly let us go. I ushered Priya back into the car, my mind racing as we sped away. Dropping her home, I was left alone with my thoughts. And that's when it hit me, a profound realization about what it means to be a man. Until that night, I had equated manliness with physical attributes and superficial charm. But witnessing Priya's courage, I understood that true manhood was about strength of character, about standing up for yourself and those in one's care. In our moment of crisis, it was Priya who had protected us, not me. The incident haunted me for weeks, but it also ignited a transformation. I vowed to never again let fear dictate my actions when someone's safety and dignity were at stake. I promised myself that I would always be the protector, the guardian. That night, under the non working streetlight, I had physically been a man, but it was Priya's courage that taught me the essence of being a man in its truest sense. From that day onwards, I embraced not just the physicality, but the responsibility and integrity of manhood. Thanks to Priya, I became a man for the second time, this time in spirit and character. विशाल, ऑन ए लाइटर नोट, चार लाइनें कि जिनमें खून नहीं होता वो खटमल से नहीं डरते। जिनमें खून नहीं होता वो खटमल से नहीं डरते, खूंखार जानवर जंगल से नहीं डरते, और मैंने कहा पिटोगे तो वो बोले
छेड़छाड़ करने वाले चप्पल से नहीं डरते. So anyways, but I think I like that twist. The only thing where I am caught between two minds is why standing up to injustice, why fearlessness, why everything has to be associated with man only. Why a woman can't have these attributes, right? I mean, we are talking of gender equality. तो एक औरत में ये सब कुछ देखकर उसको आदमी से इक्वेट करना, right? So I know from where you are coming. I totally understand that, but just I thought of a other thing. But I liked it started on a funny note and college ki kahani and romance and everything, but it went to something serious. So I like that change. But I'm still not sure about that gender equality wala part. I'll give you 6.5. 6.5. Thank you. Yes, over to you, Gajraji. All right. So I simply loved the short story. I've just completed a book of short stories. So that particular genre of writing is, suddenly sort of come alive for me all over again. And I think this was a very honest piece. Yes, in our language, we have kind of become a little used to, as Ankur very rightly pointed out, that, being fearless, being brave is equated to being a man. So those descriptions and language is something which we have to, all of us writers particularly, have to work towards, not having these cliches or conditioning in our mind. But if I put that aside, I think it was a wonderfully disarming piece, because it takes a lot to write a personal piece where one is actually sort of charting the entire journey of starting out as a bit of a person who's been defeated or not been up to the mark in the way he or she should have been, for that matter. And it's a complete journey of how, and it again, one of my favorite sort of feelings that I like to be left with when I read something is that it makes you feel empowered. So it's an 8 from me. Wonderful, wonderful. Thank you. Thank you. Anilji. Yeah, so like other judges said, I also feel similar to both of them. I also loved it क्योंकि एक बहुत ही पर्सनल पीस है और बहुत ही आइडेंटिफाइबल पीस है क्योंकि बहुत सारे लोग इस जर्नी के थ्रू गुजर चुके हैं. किसी के अपने अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं. यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर और स्पिरिट में चेंज है, which is a very good. Otherwise, so people have suffered. I have me, my friends, a lot of people have gone through these type of incidences when you are caught by police in sort of a scenario. So that's why I was very hooked on. I wanted to see ये कहाँ जाता है. इसमें कुछ चीजें थी जो आई रियली वांटेड, अगर उसमें कुछ डिटेलिंग अच्छी और होती तो मजा आता. जैसे वो नेगोशिएशन स्किल मेरा वहां पे आई वांटेड टू हियर हाउ द नेगोशिएशन, which was interesting. But like I feel that men don't cry and women can't be strong. These I don't know. I really don't know how to wrap my piece is a calypso. A calypso is a West Indian music which does not necessarily follow a meter. It's on a contemporary subject, and the words are improvised as you go on. Okay, it's not necessarily pre-written or predetermined. And I'll seek the indulgence of judges because I need to give a little background to this. This is on Virat Kohli, and this was written in 2022 when we played Pakistan at Melbourne. And I'm sure all of us are cricket buffs, or most of us are, and we will remember that match at Melbourne where it was a lost cause almost, and we had to get 28 runs in 8 balls. I wonder, and I hope you remember that. And then Virat played with Shaheen Afridi and Naseem Shah and Haris Rauf, breathing fire. Virat played probably the best innings of his life, or one of the best, certainly. And the title of the piece is "The Viking Returns," and there's a little play of words, pun intended in a couple of places. One is the Viking itself, the Virat King. We call him King Kohli.
and as we go on the word pride. So with this, I will get into my piece. The Viking returns. Beware, O merchants of speed, sultans of swing, and barons of turn and tweak. The emperor is back. As you rejoiced at the thought that the older and once ferocious king was now tamed, had deserted the cubs, and they were yours for the taking, he is back. The main regal, claws, and canines thirsting. As you gleefully lay polishing the cherry and roughing the seam to get that deadly swing going, a few of those, and you thought his epitaph was for you to write at your will. He lay quiet and still, not heeding the barks and bites. And as you tried to corner him and his pride, unsheathing your armor of bouncing quivers and swinging arrows, he rose first with a gentle warning for you to take heed not to trifle with him, which was not to be. And then he broke into his nightly run, mane bouncing, the gait and gallop as would befit a king. And then, even as you thought that in a moment you could tame him, he broke into a sprint, breathing fire, unleashing his pent-up fury, tearing into you with a deadly roar which made the cherry quiver and go up and wide, and disappearing in high skies. As you lay motionless, picking up the pieces after the decimation was complete, his fury abated, death rattled quietened, and war won by him. What did he do? He didn't hoot. He didn't shout. Didn't rub it in the raw wounds. He just raised a hand and a finger to the sky, as solitary and alone as the emperor on his throne, unmindful of the rejoicing throngs, tearful, hurting, but grateful, ascending his throne again, the lord and master of all he surveys, his kingdom and his realm. को पता है रामायण में ना एक प्रसंग आता है कि पुराने राजाओं के दरबार में कुछ उनकी महिमा मंडित करने के लिए बिरदावली गाने आते होते थे लोग। तो वो गाने में, छोटे से गाने में उस राजा की बिरदावली गाते थे और उसकी महत्ता बताते थे। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोहली साहब एक तख्त पे बैठे हैं और आप उनके सामने ये अंग्रेजी में क्लिप्स उनकी बिरदावली गा रहे। So and only a die-hard true cricket fan would have written like that. So I really enjoyed it. मुझे लगा जैसे जेफरी बायकॉट, नवजोत सिद्धू, टोनी ग्रेग सब मिलके उन्होंने बैठ के आपके साथ इसको पूरी तरह रचा हो। I think it's a true ode to the cricketer that he is, and that momentous day of 24th October 2022, I think. Right. So I really liked your writing, your passion, your recitation. Hi everyone. Today I'm going to sing Bolna Halke Halke song from the movie Jhoom Barabar Jhoom. धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघटी बना लो रोशनी से नूर के, शर्मा गए तो आगोश में लो, हो सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें, बोल हल्के हल्के, बोल हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोल हल्के, बोल हल्के हल्के, बोल हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोल हल्के, आनींद का सौदा करे, एक ख्वाब दे, एक ख्वाब ले, एक ख्वाब तो आँखों में है, एक चाँद के तकिए तले, कितने दिनों से ये आसमां भी सोया नहीं है, इसको सुना दे, बोल हल्के हल्के, बोल हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोल हल्के, बोल हल्के हल्के, बोल हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोल हल्के। थैंक यू। इसका उन्वान है तार तार। आई होप माई वॉइस इज क्लियर टू यू। ओके। अर्ज किया है कि थकी हारी मेरी माँ,
थकी हारी मेरी माँ रोज ये जादू किया करती थी। मुझे लोरी गाते गाते खुद सो जाया करती थी। थकी हारी मेरी माँ रोज ये जादू किया करती थी। मुझे लोरी गाते गाते खुद सो जाया करती थी। अंदर कहीं दफन थी शायद, अंदर कहीं दफन थी शायद जास्मीन की बेले। अंदर कहीं दफन थी शायद जास्मीन की बेले। सूखा पड़ जाने पर भी मेरी जमीन महकती थी। दिन भर आग उगलती तोप की नली पर, दिन भर आग उगलती तोप की नली पर सांझ ढले एक तितली आकर बैठ जाती थी। एक अजीब सी बीमारी थी मेरी नानी को, एक अजीब सी बीमारी थी मेरी नानी को। एक ही कहानी बार बार सुनाया करती थी। अब के दंगों में अब के दंगों में वो पागल लड़की मारी गई। अब के दंगों में वो पागल लड़की मारी गई, सड़क किनारे जो राष्ट्रगीत गाया करती थी। जब जब देहात की विकास की बात हो रही थी, जब देहात के विकास की बात हो रही थी, वो न बोल पाए जिनकी बोली देहाती थी। आखिरी शेर पेश है कि घिस घिस कर अब तार तार हो गई थी। घिस घिस कर अब तार तार हो गई थी। क्यों वो बेवा पुरानी वर्दी धोया करती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अंकुर को कोई टक्कर देता था तो सक्षम ही देता था। अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं आप, प्लीज। नहीं दैट्स वेरी नहीं एम्बैरेसिंग। नहीं, अंकुर जी को कोई टक्कर नहीं दे अंकुर सकता। नहीं, वो पहले आते थे, आप सेकंड, पर टक्कर तो देते थे आप। The title of the poem is Where Did You Sleep Last Night? And the title of the poem as a question is referenced through the poem, and it's referenced from the perspective of a woman who thinks about her husband. Not autobiographical. So just wanted to put that out there. All right, I'll get started. Between the sheets, there is a scent of a different love, a greater love, purple, painted in presence, praise, and other habits, alien. It suffuses the air, sheepish, sycophantic, eager to fog the memories of your absences. Our eyes travel in trails through cushioned words, folded shirts, fluffy pancakes. Mine hope this love lifts its hood, and yours hope to thicken the smoke screen over the question. Between the lines of your texts, words are held captive before they leap into confessions. Texts of a younger love, buoyant, traces the contours of a time before routines, kids, swollen bellies, and egos. Time erodes with its tide, a private love, one within, for my spirit and skin. I watch the mirror play truant to my self-image. Fat rolls cascade in shame, and wrinkles clutter my willowed cheeks. And yet, your gaze continues to court me. Inside this mirage is a cryptic love, virginal, elusive, nourished by illusion. Swept in its way, I bury the question for a different day. Thank you. Yes, Anil ji. What was your last line? The last line was okay, I'll read the line before that. Swept in its sway, I bury the question for a different day. Okay. Sampurna, I quite liked it. I means बहुत ही इसका जो
you understand Hindi or should I speak to you in English? मैं समझ सकती हूँ. Okay. So now, so that subtext of it, which I like the most, and you said it's not autobiographical, but means then you must have seen someone going through it because it had some means the cryptic text, those how you came up with this purple color thought from where you got that thought purple that you explained in your poem. Purple is often a word that's used to describe prose when it's very flowery and Correct. very rich. And so I attached that to love being, Very nice. So suddenly I a think little this is showy. rare I have seen it. So I have never, no one has attached purple color ever. So that's why I was very impressed with that one Okay. because it's actually that's why I want to know because this is a very well thought of, very well written, and it depicts experience, it depicts emotions and pathos, which is very nice. I liked it. I'll give you 8 for this. Wow. Gajraji. All right. So Sampurna, I will give you 9 for this. I think this poem was achingly beautiful. I write mostly about women, and one of my favorite sort of subjects is women's relationship with beauty. And we all know that beauty is very ephemeral, and a real woman who goes through marriage, who goes through children, who goes through sheer age, she alone knows. It's a very, very complicated relationship. And I don't say that, I can imagine that, this is not autobiographical, but every woman subliminally lives out these fears and these complexities. A lot of my stories in the current collection are to do with women's relationship with beauty. And so I was choking up literally hearing her read out the poem, and there was so much sincerity and reality in this. I wouldn't want to say that men won't understand, but the way a woman will feel this poem is very different from the way a man would. So I loved it. Congratulations, 9 from me. Thank you. Yes, Ankur ji. गाना है ना मेरा कुछ सामान तुम्हारे पड़ा है. I think this is that level of English version of that with a इसमें बहुत ही सारी कुछ इमोशन थी. जैसे वो कहते हैं ना कि वाकिफ हूँ तुम्हारी हर खुशबू से मगर आजकल तुम्हारे अंदर कोई और महकता है ना. तो इस एहसास को किस लहजे में कि तुम्हारी शिकायत मैं तुम्ही से करती हूँ, कहो इस अदालत में कोई सुनवाई है. तो ये वाला तो मंजर था ना. तो आई एम सॉरी, मैं हिंदी में सोचता हूँ तो इसको मैं कविता इंग्लिश की मैं हिंदी में ही बयान कर सकता हूँ. तो लेकिन आई थिंक ऑल पोइट्री इज फेमिनिन. सो मैंने बहुत लिखा है औरत पे, and I can understand what you are writing. Maybe the premise of what she wrote resonates with so many of us in so many different ways. We need not take it only in a particular way. It was touching, and I liked the way she read it. It's also important to get across what you have written exactly as how you felt while you wrote it. And I realized that it's very early in the morning. It's 6 o'clock where she lives, but that she made this effort to get up, to sit across and to explain to all of us. I mean, I didn't realize that I'd joined 10 minutes earlier than I was expected to. But then anything that this channel does is for me home. And today I have my young sister who's with me, my youngest sister. And as 60 plus Kalpana and 60 Kavita, I think I speak for Kavita also because even she truly liked it. I'm going to let her speak. एक सच्चाई थी उसके वर्ड्स में.
I'm not saying kisi aur ka kuch bhi, I'm just talking about Sampurna. And the only thing that I will not agree is that not very many men will understand. I think now everybody understands everything. It only depends on how many of us are willing to accept कि जो इसने लिखा, जो इसने बोला, वो सच है. Men would like to pretend that they didn't understand. My short story is titled A Picnic. The school insisted that all the lower KG girls go for the picnic. It was to a botanical garden to explore and learn about the flora and fauna. Meera got ready, her bag lighter than usual, a bottle and badge around her neck. With her little pudgy hands, she wiped off the last traces of breadcrumbs and marched out the door. She was happy. It was just a few months into school, but she enjoyed it. The bus journey was over before you could say cock-a-doodle-doo, and the whole school trooped down. Soon they were playing, running around, till she tripped and fell, and out fell with her all the contents of her tiffin box. The cupcake sat crooked, caked in mud. The chips became a beacon for a line of ants who were having their lucky day. Definitely not a lucky day for Meera, who loved her food. Soft sobs were making their way up to escape. A gentle touch came on her shoulder and a small, chubby, outstretched hand. Meera looked up, wiping away the snot escaping her nose. In front of her stood a small girl, the sun framing a halo around her face. A smile, a hand. "You can share with me," she said. A promise and the birth of a beautiful friendship lasting 70 years. The wizened hand gripped hard, even though the skin was tissue soft, and told me, "Surround yourself with friends. Sometimes you choose them, sometimes they choose you." Thank you. Wonderful, Deepna. Yes, Ankur Gupta. Yes, please. Deepna ji, this poem, this short story of yours was laced with very endearing innocence. And I think it has a very simple but very strong, everlasting message that be there with friends. Sometimes you are with them, sometimes they are with you. So I think stories, I think effective stories are those which give strong messages in a subtle way. So I think this is what your story achieved. I'll give you a 7. 7. Anil ji, please. दीप्ता जी, मुझे बहुत अच्छी लगी पिकनिक. एक तो बहुत ही पुराने सब आने लग जाते हैं, पुराने बचपन के दिन सब सुन के. और बहुत ही बुरा लगा व्हेन हर कपकेक्स एंड फूड फेल, क्योंकि वो भी एक अपने आप में बहुत ही कमाल की. पिकनिक में अगर खाना गिर जाए तो उससे ज्यादा कुछ बुरा नहीं लग सकता. तो ये बहुत ही एक थॉट, मतलब कि पुरानी मेमोरीज को इवोक करने वाली शॉर्ट स्टोरी है. और बहुत अच्छी है, सिंपल है. आपने अच्छी तरीके से, ये क्या एक्चुअल में आपकी फ्रेंडशिप पे बेस्ड है कि ये 70 इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप जो आपने उस पे खत्म किया, कि ये फिक्शन ही है इन अ वे? ये फिक्शन ही है सर, फिक्शन ही है. ओके, फिक्शन तब भी अच्छी है. अगर रियल होती तो और भी अच्छी होती, लेकिन आपने एक अच्छा मैसेज दिया और अच्छे से कहा. थोड़ा कम कहा, थोड़ा और ज्यादा कहते और मजा आता, क्योंकि पिकनिक में और भी बहुत सारी इवेंट्स हो सकते थे. वो कमी के लिए मैं आपको 7 दे रहा हूँ. अदरवाइज वेरी नाइस एफर्ट, बहुत ही अच्छे तरीके से एक मैसेज देती हुई और पुरानी मेमोरीज को इवोक करती हुई, वेल रिटन, अच्छे से कहा आपने. 7 फ्रॉम माय एंड. Gajra ji. I totally second what Anil has said कि I felt कि कुछ और चीजें इसमें ऐड हो सकती थी, कुछ और dimensions, मतलब वो it could have been brought alive much more, but sweet and simple. I would go for a 7. Dear, are you there? Yes, yes. Yes, I'm please. Your Mr. score. I'm Mr. India right now. So, so what I like the beginning itself when you're taking a lighter bag. So now you don't have books to take. You're taking a lighter bag. All you've got to take is a picnic. And some of the words you use, no, I'm very familiar with them from my childhood books, like Billy Bunter and all. Just trooped out,
chubby fingers. These are very, and what happened to the breakfast. These are all like, when you read, I don't know if you've read Billy Bunter, but it's very Billy Bunterish, and I used to love Billy Bunter. Yes, so I liked it, and I would give it a 7.5. तो मेरा नाम शादाब रिजवी है और मेरी नज्म का नाम है महल्ले का आखिरी बंगला। मैं इलाहाबाद से आता हूँ। तो इलाहाबाद में जब मैं बचपने में रहता था तो बहुत सारे बंगले दिखाई पड़ते थे, और जो मोहल्ले के बंगले होते थे सिर्फ एक किसी रईस आदमी का घर नहीं होता था, एक सोशल पॉइंट होता था उस मोहल्ले के लिए। तो मेरी ये नज्म उसी सोशल एंगल को देखते हुए है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। हमारे मोहल्ले में एक बंगला आलीशान था, नक्काशीदार खंबे, मेहराबदार दालान था, लाल पत्थर में गढ़ा फर्श, संगमरमर का बड़ा गुलदान था, खूबसूरती में चांद और चांद सा ही पड़ा वीरान था। बागीचे में मोहल्ले की शादियों का इंतजाम हुआ करता था, भटकते रास्तों की वो पहचान हुआ करता था, दादी के किस्सों में वहां परियों का कयाम हुआ करता था, जवानी के जोश में उसे खरीदने का अरमान हुआ करता था। अहाते में उसके जामुन, इमली, आम था, ऊंचे दरख्तों पे बच्चों की शरारतों का निशान था, किस्म किस्म के परिंदों का वहां मकाम था, सिवाय उनके जिनका वो पुश्तैनी मकान था। बंगले के बूढ़े मालिक बंबई जा बसे हैं, बच्चों की नौकरी से बेचारे वो भी कसे हैं, अखबार कभी टीवी कभी बिस्तर में धसे हैं, बड़े बंगले से निकल के 2 BHK में फंसे हैं। कुछ पाने की चाहत में जाने कितनों का घर छूट गया, छोटे शहरों की जायदाद को एक बड़ा शहर लूट गया, बच्चों का घर बसाने को पुरखों का ख्वाब फूट गया। बताते हैं कि मोहल्ले का वो आखिरी बंगला भी आज टूट गया। सुना है वहां इमारत ऊंची एक उठाई जाएगी, भड़कीले चटख रंगों से वो पुताई जाएगी, चकाचौंध रोशनी से नहलाई जाएगी, प्लास्टिक के पत्तों से हरी भरी दिखाई जाएगी। खालिस अंग्रेजी नाम की बड़ी एक तख्ती टंगाई जाएगी, तंग कमरों में ठूस ठूस बस्ती एक बसाई जाएगी, जैसे तैसे दुकानों की एक कतार भी हटाई जाएगी, स्क्वायर फीट के हिसाब से फिर बोली उसकी लगाई जाएगी। खामोश पड़े कोने पे अब बस्ती का शोर होगा, सुनसान सड़कों पे अब मजमे का जोर होगा, चांद की चांदनी पे गिरहन घंघोर होगा, सूरज की रोशनी का एक और चोर होगा। मोहल्ले की शादियां अब मैरिज हॉलों में मनाई जाएंगी, मोहल्ले की शादियां अब मैरिज हॉलों में मनाएंगे, हम शक्ल इमारतों में रास्ते थोड़े और भटक जाएंगे, किस्से के किरदार अब छावनी कहीं और छाएंगे, जवां अरमानों के कद अब छोटे ही रह जाएंगे, आम इमली के दरख्त अब किताबों में नजर आएंगे, दरख्तों के उड़ गए जो पंछी अब वापस नहीं आएंगे, सब कुछ चलेगा वैसे ही पर कुछ गम रह जाएंगे, ऊपर से दिखेंगे हम भी वैसे ही पर कुछ कम रह जाएंगे। शुक्रिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत। I was like mesmerized with each and every word and every emotion. Beautiful. Anil ji, please. मैं तो बहुत ही मतलब कि बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। एक तो ये बहुत अच्छा लगा कि इसमें प्रॉपर एकदम करेक्ट लेंथ थी, मतलब कि जितना आप सुनना चाहते थे उससे ना कम सुना ना ज्यादा सुना, जितना सुनना चाहते थे कमाल का सुना और बढ़िया सुना।
और एक तो और क्योंकि आप इलाहाबाद से, मैं लखनऊ से, हम सब बंगले में रहने वाले हैं, वो सारी दुनिया देखी। हमारी बहन की शादी वही दो बंगलों की खाली स्पेस में हुई थी, और सब आप, और आज हम भी 2 BHK में अटके हुए हैं। और वो जो इसमें माइग्रेशन का दर्द है, इसमें सब कुछ है, इसमें डेवलपमेंट वर्सेस एक ओल्ड ट्रेडिशन का दर्द है, इसमें सब कुछ था जो कमाल था और बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छी छील, मतलब ऑलमोस्ट सभी लाइंस बहुत अच्छी थी। शुरुआत के बाद जैसे ही आपने उसमें एक गेयर लगाया, उसका बंगले के लोगों का कहीं और रहना, और वो पेथोस निकल कितना बढ़िया से आता है, बहुत बढ़िया लगी मुझे। मैं इसको 9 दूंगा, और मुझे बहुत कमाल लगी है क्योंकि एकदम ये लेंथ बहुत ही कमाल थी आपकी, और कंटेंट बहुत बढ़िया था, उसका इमोशंस बहुत अच्छे थे, एक एक लाइन बहुत बढ़िया थी। वेरी वेल, Beautiful. वेरी वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। 9 Beautiful, फ्रॉम माय beautiful. एंड। हाँ जी, अनिल अनिल जी, आप कुछ कह रहे हैं? No, 9 marks from my end. Yes. और मुझे क्योंकि I can identify with this, and sure others will also identify with this. Apart from words and everything, जो उसकी meaning थी, वो एकदम it hits you. बहुत बढ़िया। थैंक यू गजरा जी। हाँ जी जी, ये तो मतलब बिल्कुल कॉपी कैट वाला मामला हो रहा है, बट आई ऑल्सो वाज थिंकिंग ऑफ एग्जैक्टली 9। और मुझे ये इतनी कमाल लगी ये शायरी इनकी, क्योंकि इसमें कहानी भी है, इसमें विजुअल भी है बहुत। यू कैन एक्चुअली सी द बंगलो एंड द, वो जो वीरानगी है वो महसूस भी होती है, वो दिखाई भी देती है। और सोशली जो कमेंट्री है इनकी कि हम सब देखते तो हैं पर सोचते नहीं हैं इस बारे में बहुत ज्यादा। तो थ्रू दिस आई थॉट अबाउट इट एंड इट बिकेम अ स्टोरी ऑफ ऑल ऑफ अस एक्चुअली। तो कहानी है, कविता है, फलसफा है, विजुअल है, और लेंथ बहुत परफेक्ट थी, ये मुझे भी लगा, क्योंकि एक सेंस ऑफ कंप्लीशन वाज वेरी सैटिस्फाइंग। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस अंकुर जी। जगजीत सिंह जी की गजल है, एक छोटा सा गांव जिसमें पीपल की छांव, गांव को छोड़कर, ठंडी छांव को छोड़कर शहर के हो गए हैं, भीड़ में खो गए हैं। आई थिंक आपकी नज्म ने पूरा जस्टिस किया उसके साथ। देखिए शादाब साहब, मैं भी एक्सपेट हूँ सिंगापुर में, परसों जलंधर जा रहा हूँ अपने माँ बाप से मिलने, तो आपकी नज्म साथ में लेके जाऊंगा। ये कहते हैं सबसे बड़ी रचना वो होती है जिसकी अपनी एक उम्र हो, जो एक पूरी उम्र जिए, एवोल्यूशन दिखे एक पूरी रचना में। तो आपकी नज्म एक रिवर ऑफ लाइफ और बहुत ही जमीन से जुड़ी। और जैसे गजरा जी ने कहा, मैं तो, आप बोल रहे थे, तो मैं इसके पीछे इसकी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है कि अपने गांव छोड़कर जो लोग शहर गए हैं ना, आपकी नजर पीछे बैकग्राउंड में चले और आगे विजुअल से उसकी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। तो बहुत ही खूबसूरत, दिल को छू लेने वाली, 9 मेरी तरफ से भी। वाओ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यस दिया। मुझे लेंस से एतराज है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये कंपटीशन है स्मॉल इज बिग। तो सबसे कहा गया था कि इतने वर्ड्स में कितना कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन आई कीप दैट असाइड बिकॉज दिस पोएम इज सो गुड। आई गिव यू अ 9 on 10। और मुझे ये सुनकर 2 फिल्में याद आई। एक 2 बीघा जमीन, जो लौटते हैं तो उनके फार्म के ऊपर एक घर खड़ा है, और दूसरी साहब बीबी और गुलाम, जहाँ पे एक दिखाया क्रम्बलिंग ऑफ अ सिविलाइजेशन। वो जो बिल्डिंग थी, वो जो एडिफिस थी, वो बिल्कुल क्रम्बल हो जाती है। तो मुझे, मैं नहीं कहता कि आपने फिल्म से इंस्पायर होकर लिखा है, मुझे याद आया क्योंकि मेरा एसोसिएशन ऐसा है। तो मुझे भी जी, बहुत पसंद आया, मुझे 9 on 10। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। So congratulations. As of now, you're the highest with 36. डॉक्टर, Yes, Kalpana ji. Yes, please. मैं मार्क नहीं देना चाहती हूँ, बट आई नीड टू स्पीक टू दिस जेंटलमैन फॉर अ सेकेंड। Please. Yes, Yes. yes. You know, I have heard quite a few of narrations and recitations and stuff in my lifetime, but he turned around and he's brought tears to my eyes. I mean, I cry easily now. I've always cried easily, but what he said was said so beautifully. I agree with Dinesh. It seems long, but it isn't. अगर वक्त होता तो मैं इनसे कहती, आप बार बार पढ़िए, because what he said was absolutely like a movie.
And what kind of a movie? Not a commercial movie, a real movie. We can all turn around and think of the places that he spoke about, of every single little detail that he went into with such beauty. So from my side, and I'm sure Kavita agrees with me, because we were both literally like going here. He was. That's so heartwarming. Thank you so much, so much. शाहजाब, मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि मैं ना वर्ली में रहता था, बम्बई में। अब मैं पवाई में रहता हूँ। तो हमने सोचा एक दिन वापस चलते हैं वर्ली। कुछ भी सेम नहीं लगा। ऐसा लगा कि किसी अनजान शहर में आ गए। ये जी कौन जी सा जी वर्ली है? ये तो यहाँ, मैं यहाँ तो नहीं रहता था। बिल्डिंग है अभी भी वहीं खड़ी हुई है, जी लेकिन ये नहीं था जहाँ मैं रहता था। जी जी तो जी बदलता है, सब कुछ बदलता है। ज्यादातर अच्छे के लिए नहीं बदलता है, लेकिन बदलता है हर चीज बदलता है। बहुत थैंक खूब यू शदाब जी सचिन। and Kalpana ji for your share of beautiful feedback. 10 on 10. स्तर दे, आत्मा करे मेरी हाहाकार, स्वार्थ लोभ में अंधा मानव सुनता नहीं मेरी करुण पुकार। मेरे असीम धैर्य का मिला कैसा ये मुझे विकट पुरस्कार। व्यभिचारी अनाचारी मनुष्यों के बंद हो गए क्या हृदय के द्वार। अपनी दुर्दशा पर अब मैं हुई असहाय नितांत लाचार। अपनी दुर्दशा पर अब मैं हुई असहाय नितांत लाचार। दैदीप्यमान थे कभी जो तट मेरे, दैदीप्यमान थे कभी जो तट मेरे, छाया विषाद पूर्ण अंधकार। हे मानव माँ कहते मुझको, हे मानव माँ कहते मुझको, माँ से करता कोई दुर्व्यवहार। विनती कर रही है आज ये गंगा, विनती कर रही है आज ये गंगा, अपना निर्मल आंचल पसार। वसुधैव कुटुंबकम की भावना मेरी, वसुधैव कुटुंबकम की भावना मेरी, समस्त विश्व मेरा परिवार। समाहित हो मुझ में मोक्ष पाता ये समस्त असार संसार। समाहित हो मुझ में मोक्ष पाता ये समस्त असार संसार। लास्ट लाइन्स हैं, न करो विवश मुझको, न करो विवश मुझको, करने पर जल प्लावित सारा संसार। पूरा जलमग्न हो जाए ऐसा मजबूर नहीं करो। न करो विवश मुझको, करने पर जल प्लावित सारा संसार। वेदों में वर्णित मूल स्वरूप मेरा, लौटा दो मुझको बस एक बार। धन्यवाद। गंगा, गायत्री, गाय, गांव का ये देश, उसमें गंगा की बात करना बहुत जरूरी है। और आपने बहुत ही अच्छे ढंग से गंगा की व्यथा को बताया। और मुझे लगता है कि हमारी सरकार का जो कार्यक्रम है नमामि गंगे, उसकी तो ये कविता आई थिंक उसका। Yeah, I want to say something to Sushma ji. please, Sushma ji, good evening. My name is Good Kavita. evening, I'm good Kalpana ji's evening, younger good evening. sister. I've been a teacher for many, many years and kindergarten teacher. What you have to say is very important. आपका जो message है जी और आपका जो poem है, it's very important. I have a request. Kindly, make it readable and understandable for very small children, because your message is very important. Because pollution in the river Ganga is not just restricted to one country. It is something the whole world has to read, understand, and everyone has a stake in the purification of the river. And Ganga is our mother. She's mother for the whole world. So small children should read and they should understand and they should take inspiration from what you are writing. ये एक पोएट्री है, एंटी वॉर पोएम टाइप की, आप समझ सकते हैं, एंटी वॉर टाइप की। एक सैनिक है जो अपने घर पे लेटर लिख रहा है और उसको वॉर जोन की सिचुएशन बता रहा है अपने परिवार को। इस चीज पे ये पोएट्री लिखी थी। सो आई एम प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। बादल कुछ अजीब हैं आज। एम आई ऑडिबल? यस यस। बादल कुछ अजीब हैं आज, लगता बारिशें आज खून की हैं। इन बर्फीली ठंड हवाओं के बीच खून में गर्मियां मई जून की हैं। इन बारूद बंदूकों की आग में फिर कहीं सिक रहा हूं मैं, पढ़ो कुछ प्यार से लिख रहा हूं मैं, पढ़ो कुछ प्यार से लिख रहा हूं मैं। आज फिर कई जाने जाएंगी, सैनिक उस मुल्क का हो या इसका, कई मांगे फिर सूनी रह जाएंगी। फिर कई घरों में लोगों का बस इंतजार ही रह जाएगा और हर क्षण
कोई सैनिक इस जन्मभूमि को अलविदा कह जाएगा। जिंदगी और मौत के बीच निडर कहीं टिक रहा हूं मैं, पढ़ो कुछ प्यार से लिख रहा हूं मैं, पढ़ो कुछ प्यार से लिख रहा हूं मैं। और अगला स्टैंजा वो अपनी माँ के लिए लिखता है कि माँ अगर तिरंगे में आऊं, माँ अगर तिरंगे में आऊं तो ना रोना तुम, माना दिल की कमजोर हो मगर शहीद की माँ हो ना तुम। आंखों में नमी सही मगर चेहरे पर नाज रखना, आंखों में नमी सही मगर चेहरे पर नाज रखना। डर कर नहीं दुश्मन को मार कर मरा है ये याद रखना। शहीदों के ढेर में जीवित कहीं दिख रहा हूं मैं, पढ़ो कुछ प्यार से लिख रहा हूं मैं, पढ़ो कुछ प्यार बहुत से है। लिख रहा हूं मैं। नेक्स्ट स्टैंजा वो अपने फादर के लिए लिखता है। जैसे कि सिचुएशंस कई हो जाती हैं कि अगर अपनी यंग एज में कभी घर देर से आओ तो पापा जो होते हैं वो कुछ खाते नहीं है, गुस्से में बैठे रहते हैं, कुछ खाते नहीं उस चीज पे। तो उसी को प्रेजेंट कर रहा है अपनी पोएट्री में कि पापा अगर देर से आऊं तो माँ पे नाराज ना होना। यूजुअली घरों में क्या होता है कि फादर जो होते हैं वो मदर पर डांटने लगते हैं कि कहाँ है इतनी देर तक। तो उसी चीज को वो कह रहा है कि पापा अगर देर से आऊं तो माँ पे नाराज ना होना। देख समाचार तुम बेवजह परेशान ना होना। पापा अगर देर से आऊं तो माँ पर नाराज ना होना। देख समाचार तुम बेवजह परेशान ना होना। लौट ही आऊंगा जीवित या शहीद में, लौट ही आऊंगा जीवित या शहीद में। मेरी चिंता में खाली पेट न सोना। इस धूल से लिपटी वर्दी में तुम सा ही कहीं दिख रहा हूं मैं, पढ़ो कुछ प्यार से लिख रहा हूं मैं, पढ़ो कुछ प्यार से लिख रहा हूं मैं। अगला स्टैंजा अपनी बहन को वो डेडिकेट करता है। और अभी उस टाइम पे ही रक्षाबंधन निकली है तो उस पे लिखता है कि छोटी तेरी राखी मिली मुझे, छोटी तेरी राखी मिली मुझे। मिठाई तो सारे यार खा गए जो थी बाकी मिली मुझे। मिठाई तो सारे यार खा गए जो थी बाकी मिली मुझे। वादा तुम्हारी रक्षा का, वादा तुम्हारी रक्षा का सारे हिंदुस्तान से निभाता दिख रहा हूं मैं। पढ़ो कुछ प्यार से लिख रहा हूं मैं, पढ़ो कुछ प्यार से लिख रहा हूं मैं। थैंक यू सो मच। Beautiful, Anurag. You were worth the wait. थैंक यू Thank, सो मच मैम। thank you for joining. Yes, थैंक यू Anil सो ji. मच। अनुराग जी बहुत अच्छा लगा। एक तो स्पेशली क्योंकि सैनिक का पॉइंट ऑफ व्यू है और बहुत ही इम्पोर्टेंट इमोशन है उसकी लाइफ के सारे। एंटी वॉर पोइट्री है आपकी जो कि अलग से है। इसके अलावा जो भी इमोशंस आपने वो की, चाहे वो फादर को रिलेटेड हो, चाहे वो देश के रिलेटेड हो, चाहे उसकी बहन के साथ रिलेटेड, चाहे उसकी माँ के साथ रिलेटेड हो, जिस तरीके से आपने उन सबको पिरोया है बहुत ही बढ़िया लगा। दिल को छूती है बिकॉज वन कैन आइडेंटिफाई विद इट। तो इसलिए मैं आपको दूंगा 7। और मुझे आपकी सिंप्लिसिटी में भी फिर भी आप इतने गहरे चीजें कह गए, वो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि विदाउट यूजिंग बिग वर्ड्स एंड बहुत ही सरल तरीके से भी आपने दिल को छुआ। कि मैं फिर भी एक सोल्जर के इमोशन था, लेकिन फिर भी आपने दिल को छुआ है और बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू सो मच फॉर रिसाइटिंग थैंक यू दिस। सो मच सर, थैंक यू सो मच। Gajra ji. जी। बहुत सिंपली और बहुत एक इमोशनल तरीके से एक ऐसे सब्जेक्ट पर इन्होंने ये पोएम लिखी है जो हम कहीं ना कहीं इस चीज को उसका जो एक फेयर अटेंशन है वो हम नहीं दे पाते। ये एक पर इन्होंने ये एक बहुत ही सटीक तरीके से हमारे सामने वो पूरा एक दृश्य दिखाई दिया हमें उनके वर्ड्स के थ्रू। So I give him a 7 because of the subject, the simplicity, and the emotion. थैंक यू सो मच मैम। Thank you, thank you. Ankur ji. अनुराग जी, ये मैं कुछ लाइनें आपकी कविता को समर्पित करता हूँ। जी एंटी सर वॉर, बिल्कुल। आपने बताया दुनिया में जब दो बड़ी लड़ाइयां चल रही हो तो जितनी एंटी वॉर पे लिखा जाए कम है। कि जी आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जी जरूरत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। और बारूद को नहीं पता तुम्हारा घर है कि मेरा, कब तक बचेंगे किस्मत है, चलो इश्क करें। राइट। और जंग वाले कायरों की नहीं, हम शायरों की सुनो। अनुराग की कलम में राहत है, चलो इश्क करें। अरे धन्यवाद सर, थैंक यू। तो बहुत अच्छा लिखा आपने। मैं आपको 7.5 दूं। ओके, थैंक यू सो मच सर। Yes, DR. जी मैम। मैं बड़ी आसानी से रोता हूँ और आपने मुझे थोड़ी मदद दे दी आज। एक बार मुझे जया बच्चन ऋषिकेश से मिला रही थी तो उन्होंने कहा
इस बच्चे को मैं जानता हूँ, ये मेरी फिल्म में देख के बहुत रोता है, तो बस मुझे आपने रुला दिया। हालांकि जो सेंटिमेंट्स थे वो हम उससे वाकिफ है, क्योंकि पिछले वॉर फिल्म में हम ये सब देख चुके हैं, जैसे संदेशे आते हैं, हमें बुलाते हैं, जी 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 तो वो इतना मुझे नॉवेल्टी वैल्यू नहीं लगा। लेकिन आपने जिस तरह से, और कभी भी पोइट्री समझाई नहीं जाती जी कि ये मैंने पिताजी के लिए लिखा, पिता हम्म ऐसा, वो भी हम्म बीच पोइट्री में तो बोलने ही नहीं चाहिए। मुझे तो प्रियम्बल भी पसंद नहीं है कोई देता है। आप जी सीधे पोइट्री पे आ जाओ। अगर मैं नहीं समझा, या तो आप में गलती है या मुझ में गलती है, जी लेकिन उसको समझाया नहीं जाता हम्म पोइट्री को। प्रोज की बात और है, लेकिन पोइट्री को मेरे ख्याल से कभी समझाया नहीं जाता। बहुत अच्छा लिखा है आपने। थैंक यू सो बट मच मैं मैम। दिनेश जी के साथ इस बात में सहमत हूँ कि कभी भी कोई भी, चाहे बड़ा या छोटा, कुछ भी जी लिखें और उस चीज को एक्सप्लेन करना पड़े ना पहले या जी बाद में, वो आपकी जो सच्चाई है वो उसमें गुम हो जाती है। अनिल थैंक यू सो गजरा मच मैम, अंकुर, थैंक यू सो मच। Anil Gajra Ankur, we have to talk about whether there should be a preamble or not, और पोएट्री को एक्सप्लेन किया जाना चाहिए कि नहीं. We'll discuss it separately in a different conference room. What do जी you say? इन प्रिंसिपल नो समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन हम जैसे गरीब लोगों के लिए जो पोएट्री को इतना स्टडी नहीं करते या समझते, उसको थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड रखना चाहिए, बिकॉज वी वांट टू, देयर इज अ सेक्शन If it's ऑफ a पीपल। difficult language, if it's हाँ, written in a लैंग्वेज का है difficult कि way, वर्ड आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, वर्ड हाँ, अगर लैंग्वेज वर्ड कठिन है, अगर बहुत इंट्रिकेट वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं एंड स्ट्रेच हुआ है कोई चीज, तो एक्सप्लेनेशन चाहिए। बट अगर सिंपल सरल लैंग्वेज में बोला जाता है तो एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन मैं सुषमा जी से हमेशा एक्सप्लेनेशन मांगता हूँ, क्योंकि उनकी Which means ज्यादातर it's not fair on the others, no, Dinesh? नज्म अगर दिनेश जी इजाजत दें, इस ग्रुप के और आप सबके लिए लिखी है, छोटी सी नज्म, वो ज्यादा जी, बड़ी जी. नहीं है. If you if you say Bye-bye. bye Good night. Thanks so much. Bye bye. Thank you so much, Sangeeta. Thank you. तो दिनेश जी मैं पढ़ूं, हाँ, जरूर. आपके ग्रुप के लिए है, लेकिन मैंने एज ए कंटेस्टेंट के रूप में वो इसलिए नहीं पढ़ी कि वो आई थॉट के अ फॉर्म ऑफ फ्लैटरी ना हो जाए, इसलिए. तो जिंदगी मुंतजिर है, जिंदगी मुंतजिर है, इसका टाइटल दिया मैंने. यहाँ हुई एक नई जीज से तारुफ, यहाँ हुआ एक नई जीज से तारुफ, मिले कुछ दोस्त अहबाब जो अब अजीज, कुछ ही दिनों में हुए दिल के बेहद करीब. आज हम सब कर लें खुद को शादमा, आज हम सब कर लें खुद को शादमा, प्रसन्नचित. आज की शाम बाकी है अभी, आज की शाम बस आज की शाम. फिर कहाँ स्मॉल इज बिग की ये खूबसूरत महफिल, ये फरागत ये पुरसुकून लम्हात, ये फरागत ये पुरसुकून लम्हात. अजनबी रूहों से इतनी मोहब्बत, वश में नहीं किसी के भी जज्बात. यहाँ मिलने को कर लें जावेदा, आज की शाम बाकी है अभी, आज की शाम बस आज की शाम. लास्ट लाइंस. रात को यहाँ से वापसी का सफर, जिंदगी मुंतजिर है अपने अपने घरों पर. इस नशिस्त से अंदाज बेहद जुदा, जिए जाएंगे जिंदगी रहें जहां पर. यहाँ की दोस्ती को कर लें कामरा, यहाँ की दोस्ती को कर लें कामरा, यानी सफल. आज की शाम बाकी है अभी, आज की शाम बस आज की शाम. बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे. ऐसे लगता है आज की शाम खत्म नहीं होनी चाहिए. बहुत सुंदर, सच बहुत में जब भी मैंने ये थर्ड टाइम है मेरा कॉन्टेस्ट में भाग लेने का, पार्टिसिपेट करने का, मेरे को लगता है ये 4-5 घंटे चले. पर मुझे गजरा और अनिल से पूछना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं. नहीं, मन तो बहुत करता है कि कंटिन्यू हो जाए, पर जिंदगी बुलाती रहती है, बहुत सारे काम बीच में So, पड़े. अनिल, गजरा, सुषमा जी, अंकुर, देखो अंकुर तुम्हारा नाम याद रह गया. सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार. थैंक यू फॉर कमिंग. Thank you कल्पना so जी, much. कविता, I Thank hope you you. enjoyed, Anil.
Oh, lovely. Thank you so much, sir. Thank you Will you so come much. again, Anil? Will you come again, Anil? Bilkul, I will. Yes, I will. Yes.